Hey everyone, good evening everyone. कैसे हैं आप सब लोग? Hi सुहासनी, hi स्वलिहा, hello अंजलि, hi धनिका, hi विजयश्री, निसर्ग, गायत्री. Good evening guys. Hi दर्शना, कल्याणी, ऋतिक, त्रिष्मन, तनिका, स्नेहा. Good evening, hi स्वलिहा, जसना. चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? ओला, तरुणी. I am good. Hello कल्याणी, I am good. Hi साक्षी. चलिए बच्चों, तो आज तो हमारा बिल्कुल मैराथन चलने वाला है ना? 3 hour marathon, but yes, you will be having 45 minutes of break also, don't worry. How are you? Ready for physics marathon? Okay, great, I'm good. Hi Jonna, hello Nasreen, hello Anushka. आज मजा आएगा. चलिए, बहुत अच्छी बात है. हेलो मुस्कान, हाय समीक्षा, हेलो अनुराग, नमस्कार, बढ़िया. हाय खुशी, हाय अथर्व, हेलो गोकुल, हाय उज्ज्वला. लंच किया है क्या? हाँ हाँ, लंच बिल्कुल कर लिया. आप लोगों ने भी कर लिया होगा, आई होप, है ना? हेलो स्नेहा. चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, है ना, विदाउट एनी डिले. हेलो सोनाक्षी, जाहिद. ओके, सो आई डोंट सी लाइक द फुल अटेंडेंस टुडे, है ना. अभी तो फुल अटेंडेंस नहीं है. देखते हैं खुशी, देखते हैं, कभी ना कभी तो मिला देंगे. डिपेंडिंग ऑन व्हेन शी इज फ्री. तो अभी तो सिर्फ हाफ अटेंडेंस है, मे बी बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, है ना, 4 बजे. लेकिन अभी तो स्कूल्स बंद हैं, सब लोग घर पे ही होंगे. हाँ, व्हाट अदर्स आर डूइंग देन? And generally you don't have 4 p.m. class at Vedantu, right? आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं? 6:30 only, isn't it? 2 बजे तक स्कूल है? फलक, ये कौन सी जगह पे स्कूल खुल गया? सर, वी हैव ऑनलाइन क्लासेस इन स्कूल. अच्छा जी, स्कूल क्लासेस आर गोइंग ऑन ऑनलाइन. ओ ओ ओ, तो ऑनलाइन क्लासेस तो बंक मार सकते हो, उधर भी खोल के रख लो, इधर भी खोल के रख लो, उधर ऑडियो और वीडियो बंद कर दो, है ना. अभी अभी मैंने एक मीम देखा था कि इन प्रीवियस डेज, if someone has to bunk the school, then they have shown the school boundary wall, people jumping from that. And in 2020, if you have to bunk the school, camera off, mute, है ना, खत्म, बंक हो गया. खैर, यहाँ मत ट्राई करना. ओके, पता चला मैंने सिखाया, मेरी क्लास में ही इधर बंक मार दिया और उधर स्कूल वाली क्लास अटेंड कर रहे हो. नहीं, ऐसा मत करना, है ना. खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं. राइट एवरीवन. सो अच्छा, 4:30 ऑन वेदांत. ओके, तो चलिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट वी आर स्टडिंग nowadays, है ना. And in the last class, if I give you a quick recap of the last class, we have discussed about the formula of current. So if you have any conductor which is having some cross sectional area A, है ना, और इसमें जो current flow होगा, that current I is given by NEA into VD. We have done good questions on this. One of the question was slightly complicated where you had to find out the number of atoms per unit volume. But yeah, even you have learned that. We have done a quiz as well, similar wala. So this N is known as number of free charges per unit volume present in the material. E is the, you can say, charge of one electron. A is the area of cross section. And VD is the drift velocity. So all these things I have discussed in the last class. Also, we discussed about resistance. So resistance is given by rho L divided by area. And we have seen this formula in class 10th also. Here also we have seen the revision. The resistivity rho, it is a material property. So it depends on material as well as it depends on the temperature of the material. You will see very soon that in conductors and semiconductors, the variation of resistance or resistivity with temperature is different, है ना. तो वो सब हम बाद में देखेंगे, don't worry about it. But yeah, for now, it depends on material, it depends on the temperature. Very good. इसके बाद हमने ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नया सीखा नहीं था, but yeah, we did the series and parallel combinations. I told you how do you have to identify series and parallel. We did a question in which 3 resistors, they looked that they are in one straight line. So some of you thought it must be series, but I told you दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, है ना. So ऐसे ये circuit ऐसा given था. So we said if two wires are given, this potential and this potential will be same because of the plane wire, and this potential and this potential will be same again because of the plane wire. So actually when we drew the circuit depending on the 2 points, ये parallel में आया था. Then also I told you how the Wheatstone bridge looks like, and even if a complicated Wheatstone bridge was given, where there one resistor was kept, there one resistor was kept,
I told you the method by which you can actually realize that circuit as a real Wheatstone bridge circuit, how it looks like, है ना? So the circuits can come to you by changing their attire, right? वो बहरूपिये की तरह आपके सामने आ सकते हैं. You have to be careful. You have to draw the actual circuit by the basic method that I have told you. By the way, we will practice more and more questions on that method. Don't worry about it, okay? To start this class now, as I told in the beginning, we'll be deriving this formula of current. है ना? ये मैंने आपको कल ही बता दिया था. So guys, derivation is quite easy, you should say. बहुत आसान सा derivation है. Next 5 minutes, you focus on board. The derivation that I am giving to you, it is important from your NCERT point of view only, not for your NEET examination. So just out of my courtesy, I am giving it. थोड़े बहुत derivation जो बहुत important होते हैं वो वाले मैं करा दूंगा, है ना? तो चलिए देखते हैं. How do we do this derivation? देखो. So first of all, you need to consider the cylinder, है ना? तो आपका ये cylindrical conductor ले लो आप. Generally we take cylindrical conductor only. So this is our conductor, everyone. Inside this conductor, if you remember, I have told you that charges ka flow is like army men moving, right? So they are having some separation between them, perfect separation, and they move like an army, है ना? ऐसे move करते हैं. वो वाला example भी मैंने आपको दिया था कि if drift velocity is only 1 mm per second, then if the tube light is 10 meter away from the switch, then how it can like suddenly start glowing? If an electron has to go to cover these much of distance, it will take a lot of time. But no, actually so many electrons are there stacked inside the conductor. You can say even one small push is enough to glow the bulb immediately, right? चलिए, तो this thing you remember, right? अब देखो इसको हम derivation कैसे करते हैं. Imagine an electric field is applied here. Electric field is, let's say, E vector, okay? Let's say the total length of the conductor is L. Slide nahi aa rahi hai. There is no slide here, Jahid. I'm just writing on my own, okay? And I forgot to mention this point, everyone. So today our class teacher is Surandan sir, Surandan Kumar sir, and he is having very good subject knowledge of physics. So he'll be taking all your doubts. And sir, please tell Jahid that there is no slide here. I'm just writing on my own and I'm showing it. If he's not able to see anything, he has to refresh. So guys, if electric field E is applied here, the potential difference across the conductor will be how much? For that, I have told you the short trick in electrostatics. Potential difference is E into D, वेदांतु के first three letters, है ना? ये सब हम कर चुके हैं. Here can I say electric field with that logic will be V upon D, and the distance or the length of the conductor is L. So this is the relation between electric field, potential difference across the two ends, and the length of the conductor. ठीक है, उसको साइड में रखते हैं अभी, है ना? अब देखो, I want to calculate the current flowing through it, and I know one thing. बच्चों, if I consider a cross sectional area, right? Whatever free charges this cross sectional area is having, है ना? जो भी इसके अंदर free charges हैं, this cross sectional area, whatever free charges it are having, all the free charges will be moving with same speed at one cross section. यही तो हमारी बात हुई थी, है ना? At all the cross sections, so many charges are there and they are moving with same speed, like army men. Army men कैसे होते हैं? एक रो में अगर आप देखेंगे, the whole row moves together. Even उनके हाथ और पैर भी बिल्कुल साथ साथ में ऐसे चलते हैं, right? So something like that. All the free charges, let's say the positive charges, they are having charge E, they are moving in the forward direction. If that is the case, how much is their speed with which they are moving? That speed is known as drift speed. Correct, bachcho? So the speed with which they are moving is the drift speed Vd. Very nice. If I ask you the simple question that tell me guys, if these charges are moving with Vd speed, how much they will move or how much distance they will cover in a small time interval dt? How much distance will they cover? So it's very simple, by the way. The distance covered will be the speed into the time. So I can say if the interval is very small, let's say after some small interval, the all charges of that cross section are somewhere here, dt time के बाद. So can I say this distance moved, the small distance moved, right? It is v multiplied by dt,
है ना, वेलोसिटी इंटू dt, एंड मोर स्पेसिफिकली बच्चों वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आई कैन राइट vd मल्टीप्लाइड बाय द dt। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, when the charges are flowing from this cross section बच्चों, पहला वाला क्रॉस सेक्शन to the next cross section, यहां से यहां, then I want to know the total charge that has crossed this cross section, मतलब इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके कितना चार्ज चला गया। तो फॉर दैट आई नीड टू कैलकुलेट द चार्ज कंटेन्ड बाय दिस एरिया, राइट। देखो दो क्रॉस सेक्शंस हैं, राइट। फर्स्ट ऑल द चार्जेस वेयर हियर, बाद में आफ्टर सम टाइम ऑल द चार्जेस आर नॉट हियर बट समवेयर हियर। तो हाउ मच चार्ज हैज फ्लोन, जितना आपको यहाँ पे एरिया के अंदर दिखाई दे रहा है। So how do I calculate how much charge is present in this shaded area? Getting my point? Or you can say how much charge is flown from that cross section to that cross section. कैसे निकालेंगे देखो, I know the distance between the two cross sections, which is Vd into dt, correct? I know the area of cross section. तो बच्चों सोच के देखो, the two cross sections I have drawn, what is the volume of that cross section? Volume क्या होता है, सिलेंडर का एरिया into the length. तो कैन आई से द वॉल्यूम ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, जहां से चार्जेस फ्लो हुए हैं, है ना, द नंबर ऑफ चार्जेस दैट हैव फ्लोन, कैन आई राइट दैट वॉल्यूम एज एरिया इंटू vd इंटू dt, सही है ना। लेंथ इज vd इंटू dt एंड एरिया इज a, तो इतना वॉल्यूम है वहां का। एंड वी ऑलवेज नो द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इज n। तो बेटा अगर नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इज n, then what is the total charge present on the element? Number of charges per unit volume into volume। देखो यहीं पे है जो भी है, बस इतना सा छोटा सा बात आपको समझना है। I want to calculate how much is the total charge crossed this surface, यानी कि dq निकालना है मेरे को, है ना। I know number of charges per unit volume is small n, जो मैंने पहले ही डिफाइन कर रखा है। तो number of charges per unit volume is given। If you want total number of charges in that area या volume, you will multiply with the volume। तो हमने क्या किया, number of charges per unit volume into volume of that element। अब देखो volume of the element कितना है बताइए everyone, a into drift velocity into dt। This is the total number of charge present in that amount of volume, n multiplied by volume, and each charge carries 1.6 into 10 power minus 19 amount of charge। तो इसको e से मल्टीप्लाई करने का, ये आपको क्या दे रहा है यहां से यहां तक, दिस इज जस्ट गिविंग यू नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ, लाइक चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच चार्ज, राइट, तो दैट इज e। ये हो जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है, अब क्या करना होता है बच्चों, अगर आपको करंट चाहिए, देन करंट इज जस्ट dq डिवाइडेड बाय dt, है ना। तो dq बाय dt यानी कि dq इधर है, dt को उधर से इधर ले आओ, आंसर आ जाएगा n e a v स्मॉल d, डन एंड डस्टेड। सो दिस टेल्स यू द रेट एट विच चार्जेस आर फ्लोइंग। सिंपल सा डेरिवेशन, कुछ भी नहीं है। एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, if this cross section all the charges are moving with vd in dt amount of time, small amount of time, how much will they move, vdt। when this cross section is moving from here to here, how much charge is flowing, the charge flown is number of charges per unit volume multiplied by volume present between these two cross sections। यहां से यहां फ्लो हुआ ना, तो ये कितने चार्जेस फ्लो हुए, जितने चार्जेस उस वॉल्यूम में प्रेजेंट थे। हाउ डू वी कैलकुलेट दैट, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। हाउ डू आई कैलकुलेट वॉल्यूम नाउ, लेंथ विच इज vd dt मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम। उसके बाद तो कुछ भी नहीं था यार, dq by dt, you got the answer। टेल मी एवरीवन if this small derivation is clear to all of you। बताइए बताइए, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। अब ये आएगा आपके एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी में, जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है वैसा लिख के आ जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, वेरी नाइस, लेट मी मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अच्छा अब देखो, एक्चुअली द ड्रिफ्ट स्पीड, इसका भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन होता है, एंड देन देयर इज अ स्मॉल थिंग नोन एज मोबिलिटी।
तो ये दोनों चीजें मैं आपको अभी समझा देता हूं, ठीक है। व्हाट इज ड्रिफ्ट, स्पीड का एक्सप्रेशन, करंट का एक्सप्रेशन तो आ गया है ना। अब देखो होता क्या है एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि यहां पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, Vd इज इक्वल टू ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। किसी को पता है क्या क्लास में ये टाउ क्या होता है? एनी आइडिया, एनीवन इन द क्लास कि ये टाउ आखिर होता क्या है, बताइए। कुछ आइडिया है किसी को? टॉर्क। अच्छा, नहीं टॉर्क नहीं है यहां पे, टॉर्क वार्क का कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। एंड कुछ याद है कल मैंने आपको रिलैक्सेशन टाइम पढ़ाया था? हाँ। अच्छा ये बताइए कि ये रिलैक्सेशन टाइम आखिर क्या था बच्चों? व्हाट वाज द रिलैक्सेशन टाइम? किस चीज को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं? बहुत छोटू सा था डेरिवेशन, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं था वंशिका। रिलैक्सेशन टाइम मींस द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स। अच्छा, किसके कोलिजन की बात कर रहे हैं हम लोग? कौन कोलाइड हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग। मैं ना आपको सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं यहाँ पे, वन स्मॉल डिस्क्लेमर, बिकॉज बाद में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आता है। देखो ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, Vd इज इक्वल टू ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, ये एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इफ यू सी सम ग्रेट बुक्स लाइक मिस्टर एच सी वर्मा's बुक, है ना, सर एच सी वर्मा's बुक, या फिर डीसी पांडे, या फिर रेजनिक हेलिडे, यू विल फाइंड वेरिएशंस। किसी बुक में ये वाला फॉर्मूला होगा, किसी बुक में ये वाला फॉर्मूला होगा। कंफ्यूजिंग है ना बात? बहुत कंफ्यूजिंग है। इतना कंफ्यूजिंग है कि एच सी वर्मा सर हैज रिसीव्ड मिलियंस ऑफ मेल्स अक्रॉस द ग्लोब कि सर ये क्या मजाक है। एक्चुअली ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन है, तो हम तो भाई एनसीईआरटी को गॉड बुक मानते हैं, क्योंकि हमें तो क्यों, कौन सा एग्जाम देना है, वी हैव टू गिव द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला एच सी वर्मा में प्रेजेंट है। अब जनरली जो जेई के बच्चे होते हैं वो एच सी वर्मा पढ़ते हैं, वो आके पूछते हैं मुझसे सर ये क्या बात हो गई, मतलब बोथ द बुक्स हैव डिफरेंट फॉर्मूला। तो एक्चुअली यू नो व्हाट, एच सी वर्मा सर गॉट लाइक pretty disturbed with this thing happening, and he has made a video on YouTube. मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, अभी स्क्रीन शेयर तो मैं नहीं कर रहा, बस अपने फोन पे चला के दिखा देता हूँ, देखो। सो ये देखो बेटा, इस वीडियो का नाम क्या है देखो, आई होप यू विल बी एबल टू सी इट, है ना। यहाँ पे देखो दो इक्वेशंस दिख रहे हैं आपको, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखेगा, दिख रहा है आप लोगों को? बताओ। ई कैपिटल ई टू टाउ बाई टू एम, है ना, और ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। और ये किसका चैनल है? एच सी वर्मा सर का चैनल है, और उन्होंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। और उनको बहुत सारे डाउट्स आए थे, तो ये उसमें पढ़ा के बता रहे हैं आपको कि आखिर ऐसा क्यों है। मतलब ये सोचो, ये वीडियो तो इन्होंने अभी अभी डाला है, 8 months अगो ही हैज केप्ट दिस वीडियो। हम जब पढ़ाई करते थे राइट डिकेड्स अगो, तो हमें भी ये डाउट आता था कि ऐसा क्यों, एच सी वर्मा अपॉन टू क्यों लिखा है, कौन सही है, क्यों, कौन गलत है। तो यहाँ पे ना हम केमिस्ट्री का जनरली मजाक उड़ाया करते थे। टेल मी, लेट मी टेल यू द स्टोरी, राइट, कि केमिस्ट्री में यू हैव टू मग अप थिंग्स, देयर आर एक्सेप्शंस, फिजिक्स में देयर इज नो एक्सेप्शंस। सो दोज स्टूडेंट्स हु लाइक केमिस्ट्री, दे यूज्ड टू आस्क अस इन कोचिंग कि अच्छा तुम्हारे एक्सेप्शन नहीं है तो भाई बताओ इसका एक्सप्लेनेशन दो। लाइक एनसीईआरटी में तो ये फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला दिया है, बट एवरीथिंग हैज अ एक्सप्लेनेशन इन फिजिक्स व्हिच इज अ वेरी नाइस थिंग, है ना। अभी तक तो जो भी हम पढ़ते हैं सब चीज का एक्सप्लेनेशन होता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन ये है कि एक्चुअली द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इट इज द पार्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स जहां पे आप उसमें सिंपल न्यूटोनियन मैकेनिक्स यू कैन नॉट अप्लाई। हम जो है अर्थ में रहने वाले जो जो भी साइंटिस्ट, और ये तुम्हें पता है कि हमें बहुत ज्यादा साइंस अभी भी नहीं आता है, यू विल अंडरस्टैंड दैट, राइट। मतलब जब भी बात होती है कि एलियंस आए थे, उनका यूएफओ था, इफ यू लाइक इवन इफ यू इमेजिन देयर टेक्नोलॉजी, अगर है वो इस दुनिया में सच में, तो दे आर आई मीन सो 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 अहेड ऑफ अस। तो हमारे पास एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, वन अप्रोच, वेयर वी यूज एग्जैक्टली सुहासिनी, वेयर वी यूज द काइनेमेटिक इक्वेशंस, खुश होते रहते हैं हम, है ना। एफ इक्वल टू एम ए लगा लगा के हम सोचते हैं हमें पूरी मैकेनिक्स आती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे भी बिकॉज दिस इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, theoretically
you are not allowed to use the Newtonian mechanics. This is a very 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 gross approach which we are doing here कि इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिख लिया VD is equal to U plus AT. भाई वो अलग ही चीज है, वो पूरा क्वांटम पे चलेगा वो, है ना, बट फिर भी हमें तो खुद को सेटिस्फाई करना है, कुछ एक अच्छा सा इक्वेशन लिख के बच्चों को पढ़ाना है ना। तो उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बुक लिखी, सबने बुक लिखी और उसमें सबने लगाया अपना अपना इक्वेशन। किसी ने एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख के ये वाला फॉर्मूला डेराइव कर दिया, किसी ने ये वाला फॉर्मूला डेराइव कर लिया। सो यू ऑल्सो वॉच दैट वीडियो ऑन एच सी वर्मा सर का जो यूट्यूब में है ना, आफ्टर द क्लास, so you will understand this actually. Okay. Okay, Gokul, yeah, no problem, I'll speak in English, don't worry. So please watch that video. He has clearly specified कि actually electrons का movement is quantum mechanics wala part. We just apply this gross approach of VD equal to U plus AT and all those things, right? Correct, Taruni, but the equations are different in both, right? No problem, Gokul, I'll speak in English. So bacho, what happens now? Which formula do we have to take? Actually, you have to take this formula only, the NCRT one. But even if you compare both the formula, everyone, one thing is for sure in all the formulae, that VD is at least proportional to E, capital E, tau upon M. Can I say this in both the formula? Same thing, है ना? Just the factor is changing, just the constant multiplied is changing depending on different theories, है ना? Some of the people take so many different electrons, considering them to be moving at different speeds, then they take the average of it, फिर वो कुछ और formula लेके आते हैं. But in all the formulas present, one thing is pretty sure कि drift velocity will be E, capital E, tau divided by M. ये तो सही होगा, proportional का relation, ठीक है? अब इसका सिंपल सा जो डेरिवेशन है, दैट ग्रॉस अप्रोच ऑफ डेरिवेशन दैट वी हैव टू स्टडी, बाय द वे, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, व्हाटएवर यू से, is this. So V equal to U plus AT. Imagine electron starts from zero velocity. Acceleration of electron will be force divided by mass. The force acting on the electron or any positive charge, whatever you want to take, force will be small e into capital E. Correct? Electrostatic force, charge multiplied by the electric field. तो force is small e capital E upon m. I mean m करने से acceleration बन गया, a को यहाँ पे रखा, tau is the relaxation time, time between two intervals. ठीक, तो यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है, एंड दिस वन वी हैव टू रिमेंबर. आई विल जस्ट राइट इट डाउन इन द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल. तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाय एम. ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. समझ आ गया एवरीवन? यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. टेल मी, गॉट इट? समझ आ गया ना? चलिए, अच्छा, अब एक फैक्टर है विच इज नोन एज मोबिलिटी. One factor is known as mobility. You will find it written in your NCRT as well. You just have to have the knowledge of it. So whatever stuff I'm teaching today, right, since I started, I'm teaching you the NCRT stuff. But such things are not very important in NEET. And imagine, can NEET ask this question? Ki what is the correct expression of drift velocity? And ये सारे ऑप्शन होंगे, दंगा हो जाएगा. You understand दंगा, right? Riots will happen. Physics professor will take out their swords, they will come out on the roads, and if this question comes, getting my point, what I'm trying to say, नहीं आएगा नीट में. हाँ, but the question can come in the NEET is drift velocity is proportional to what? तो ये बिल्कुल सही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. दिस इज ट्रू एवरीवेयर इन एवरी ईच एंड एवरी बुक्स, सभी जगह सही है. बट हाँ, ये यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है. एंड अगर आपने थोड़ा सा भी वो पढ़ा है, इफ यू हैव स्टडीड द एटॉमिक स्ट्रक्चर, पढ़ा है क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक? 11th मतलब केमिस्ट्री में था क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर? हैव यू स्टडीड एवरीवन? यस, राइट. So you have studied in atomic structure according to the Bohr's model that electrons actually revolve in given orbits, है ना, some certain orbits. तो इलेक्ट्रॉन तो कोई भी स्टेट में रिवॉल्व कर रहा होगा ना, एंड इट्स लाइक क्वांटाइज्ड होता है इसका एंगुलर मोमेंटम, आपने पढ़ा होगा, है ना, NH/2 is the angular momentum. So depending on that, अब ये वेलोसिटी में यहाँ पे 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है. क्वांटाइज करते रहो, कब तक करना है ना, डिफरेंट ऑर्बिट्स भी तो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के. सो दैट इज व्हाई
नो वन कैन कमेंट ऑन कि यहाँ पे फैक्टर कौन सा मल्टीप्लाई होगा, बट इट इज प्रिटी श्योर कि इट विल बी ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, है ना। बहुत डाउट्स आते थे बच्चों को, इसलिए मैंने आज टाइम निकाल के करा ही दिया ये आपको, आपको इसमें अब कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक। चलिए सर, हम लोग इस वीडी और पहले वाले वीडी के फॉर्मूले को इक्वेट कर सकते हैं क्या? हाँ, एक ही बात है, कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो आपको वहां से असल में रेजिस्टेंस मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ ई कैपिटल टाउ एम, इन सब के टर्म्स में, है ना। चलिए बच्चों, ये वैसे अच्छी चीज पूछी है स्नेहा ने, शायद हम उसको ट्राई भी करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है स्नेहा, दैट इज अ नाइस थिंग टू आस्क एक्चुअली। चलिए अब मैं थोड़ा सा और पढ़ाता हूँ, फिर साई तरुणी को मैं अनम्यूट कर दूंगा, डोंट वरी तरुणी। देखो बच्चों, मोबिलिटी, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज E इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम, यानी कि यहां पे जो फैक्टर दिख रहा है ना आपको इस फॉर्मूले में, E टाउ डिवाइडेड बाई एम, ये वाला फैक्टर, इसको आप मोबिलिटी कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से, सॉरी कैपिटल ई नहीं लेना था यहाँ पे, है ना, एक मिस्टेक हो गया, माय बैड, मैंने गलत जगह घेरा लगा दिया। सो इट इज स्मॉल ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, देखो है ना, स्मॉल ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम। सो द मोबिलिटी विल बी एक्चुअली स्मॉल ई टाउ बाई एम। तो बताइए वीडी क्या बचेगा फिर, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो मोबिलिटी विच इज म्यू is defined as Vd divided by E. Try to understand this theoretically. Mobility tells you for a given value of electric field, what is the drift speed? If the drift speed is more in a material for a given value of electric field, then mobility will be more. Drift velocity more है मतलब it will travel faster, right? So mobility just tells you that how fast the charges can move in a material. और मोबिलिटी का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज हैविंग मोर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोर विल बी द मोबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी इज व्हाट, स्मॉल ई कैपिटल टाउ डिवाइडेड बाय एम। सो मोबिलिटी इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द रिलैक्सेशन टाइम, मतलब अगर आप एटॉमिक लेवल पे जाके देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलिटी इज, तो आपको समझ में आ जाएगा, इट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का। अब ये पूरा एनसीईआरटी का स्टफ है, रिमेंबर इट फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, एंड आपके स्कूल में भी कराया होगा वैसे इसको डिटेल में, है ना। तरुणी को शायद कोई सवाल पूछना है क्या? तरुणी, आई विल अनम्यूट यू, ओके। चलिए बेटा बताइए क्या सवाल है आपका, एक सेकेंड। हाँ तरुणी। Sir, my doubt is that the formulas, the board formulas you gave us, right, sir? The HC bar तरुणी, was. आर यू स्पीकिंग? Yes, अरे sir. मेरे पास तो हेडफोन ही नहीं है। शी मस्ट बी स्पीकिंग। बेटा तरुणी, अगर बहुत सीरियस नहीं है डाउट तो थोड़ा देर वेट कर सकते हैं क्या? आई विल हाँ, ब्रिंग माई हेडफोन्स आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ठीक मैं है आपको सर। फिर अनम्यूट कर दूंगा, ओके। अभी मेरे पास है नहीं, वो दूसरे रूम पे पड़ा हुआ है। आई डोंट वांट टू ब्रेक द फ्लो, एक छोटा सा चीज है वो कर लेते हैं, फिर आई विल ब्रिंग माई हेडफोन, ओके तरुणी, इफ यू डोंट माइंड इट। चलिए बच्चों, यहां तक सब कुछ चमका है क्या, बताइए एक बार मुझे। इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? द डेरिवेशन ऑफ आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, है ना। द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करने वाले हैं, ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। एंड अभी अभी स्नेहा ने पूछा था कि सर हाउ फास्ट वीडी मूव, हाउ फास्ट वीडी मूव का मतलब क्या है, वीडी इज द वेलोसिटी, राइट, हाउ फास्ट वेलोसिटी मूव्स, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट, राइट मुस्कान। Vd is itself is the speed, आप बोल रहे हैं how fast speed moves, there is no meaning of that. How fast the electrons move per unit electric field, that is the mobility, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, Vd formula has negative sign in NCERT because they have considered the electron beta. Getting my point, Pawan? If you consider electron, charge will be negative, right? If you consider the positive charge, charge will be positive. प्लस और माइनस में बिल्कुल परेशान मत होना, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। यहां तक क्लियर है ना बच्चों, स्मूथ चल रहा है ना क्लास? अच्छा, अभी स्नेहा ने एक डाउट पूछा था कि सर कैन आई इक्वेट दिस वीडी फॉर्मूला टू दैट वीडी फॉर्मूला विच वी हैव सीन बिफोर, है ना, आई इक्वल टू एनी ए वीडी। चलो मैं उसका डाउट क्लियर करता हूं, एक अमेजिंग चीज यहां से आपको निकल के आएगी, देखना ध्यान से, ठीक है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लेने पर नेगेटिव होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो बच्चों, लास्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग, फिर हम सर्किट थ्योरी पे आ जाएंगे। देखो बच्चों,
I is equal to what? NEAVD. Okay, okay. Sunandan sir, I will refresh, but you please ask the Muskan, the student, also to refresh once. हो सकता है उसकी वजह से ही प्रॉब्लम. In such case na, first of all ask the student to refresh, because sometimes they are having bad internet and that happens. चलो बच्चों देखो मैं क्या बोल रहा था अभी. I is equal to NEAVD, right? And VD का फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या देखा? We have seen the formula E capital E tau divided by M. Correct? This is the formula for VD that we have seen. अब देखो हम लोग क्या करेंगे. At Sneha was saying कि sir can I keep this VD formula in the previous formula? चलो करके देखते हैं, कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग सा निकल के आएगा, देखना. I is equal to NEA VD. VD के जगह हम लोग रख देते हैं, देखो VD can be replaced by this E capital E tau divided by M. सही है ना? What did I do? In the previous formula that we have studied, in place of VD, I have written E capital E tau divided by M. ठीक है, बहुत बढ़िया. अच्छा, एक और चीज हमने सीखा था बच्चों. If the length of the conductor is L, then do we know what is the relation between electric field and potential difference? बिल्कुल पता है सर. V equal to E into length, यानी कि E is equal to potential divided by length. We have seen that, right? Very nice. Let us replace with that. Let me tell you some interesting thing after this, okay? कि क्या होगा ऐसा. अब देखो, this formula will become, N is there, E and E will become E square, A is there, tau is there, divided by M. Electric field can be now written as V divided by L. This is the equation. Now V can also be written as, देखो, I am taking everything on the right hand side. I am finding out how much is V का formula. तो I'll write M into L. M क्या है बच्चों? वैसे mass of the electron, right? याद रखना, E is the charge of electron, M is the mass of electron. Sometimes in books suffix E is also used. I'm not using it, but please remember M is the mass of electron. है ना? Charge of electron is E. M into L divided by any square tau into A into I. What did I do? Just side change, nothing else. अब बेटा ये ओम्स लॉ है. V is equal to I into R. कुछ समझ में आ रहा है? This is the Ohm's law. You should get goosebumps. अभी तक आपको सिर्फ ओम्स लॉ पढ़ाया गया था, आज आपको दिखाया गया है कि कैसे आता है ये. अब यहां से यू कैन से एवरीवन कि R is actually equal to ML divided by any square tau into A. और यहां से एक और मैजिक देखना बच्चों, ये पूरा का पूरा पार्ट ना रेजिस्टिविटी है. एंड नाउ आर कैन बी रिटन एज रो एल बाई ए. भाई साहब, अभी तक आपको सिर्फ ये पढ़ाया गया था कि रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए. टुडे यू आर फीलिंग इट कि भाई ये रो एल बाई ए क्यों होता है. वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, रो का फॉर्मूला क्या आएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन number of electrons per unit volume into E square into tau. Isn't it a material property? इसमें ऐसा क्या है? देखो, mass of electron है which is a constant, charge of electron है which is a constant, relaxation time and number of electrons present per unit volume is a material property. कौन से material में कितना electrons होगा per unit volume, ये तो material ही बताएगा ना. apart from that, यहां पे और कुछ भी नहीं है. रेजिस्टिविटी इज द कंप्लीटली मटेरियल प्रॉपर्टी. फील आई क्या टॉपिक की? सारे के सारे फॉर्मूले जो आज तक आप एकदम वेग फॉर्म में पढ़ते थे, V इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एवरीथिंग यू सॉ हियर, यू फेल्ट इट. करेक्ट. अच्छा, आपको एक और चीज पढ़ाई गई थी बच्चों, फील करते जाओ बस. रेजिस्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. Yes, it is true, because the relaxation time is the function of temperature and resistivity depends on relaxation time. समझ आ रहा है?
Relaxation time is the function of temperature. At higher temperature, the relaxation time will be less. At higher temperature, relaxation time will be less. Resistivity will become more, and this is the concept of conductors. Conductors at higher temperature, they do not behave as conductor, they become insulator. आपने शायद सुना भी होगा, बट यहाँ पे आप फील कर पाएंगे इसको. चलो उस पर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट बाद में करेंगे. बट ये फील हुआ क्या सभी को? राइट तो हमने यहां से देख लिया V इक्वल टू आई आर. कल हमने ये सब फॉर्मूले लगाए थे, और ये R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है ना. चलो अगर फील आया तो बताओ एवरीवन इन द पोल. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है बेटा ऊपर, ठीक है. टॉप पे m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है ना. चलिए बच्चों, तो ये फील बहुत कम टाइम मिल पाती है बच्चों को, मैंने आज आपको दे दिया. और वैसे इतना डिटेल में हम जाते नहीं है, बट कभी कभी चले जाते हैं जब बच्चे अच्छे होते हैं. चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ना. लेट अस मूव अहेड नाउ. एक छोटा सा क्विज कर लो यार, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. मोबिलिटी इज द रेशियो बिटवीन करंट एंड टेम्परेचर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी. ठीक है, चलिए बताइए एवरीवन. Vikas Dogra is asking, sir, how mu is directly proportional to relaxation time? As time ज़्यादा तो mobility कम, confusing me. Okay. Actually, पहले तो अच्छा, ये अगर मैं आपको दिखाई दूंगा तो फिर फायदा क्या होगा. चलो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है. देन आई विल एक्सप्लेन. विकास, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला भी दिख गया. चलो ठीक है, गोइंग टू स्टार्ट दिस. 5 4 3 2 एंड 1 गो. 3 2 एंड 1, द टाइम इज अप. चलिए देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है. सभी ने दिया. शोभित, आरुषि, तरिणी, तेजस, ऑस्लिन, फलक, सोनाक्षी, पार्थ, विकास एंड भवनूर हैव गिवन द करेक्ट आंसर. 77.53. बेटा सिंपल सी बात है, मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये गलती से दिखा भी तो दिया था, यहीं से समझ जाते कम से कम, है ना यार. ठीक है, विकास का डाउट बहुत अच्छा है, एंड आई विल एक्सप्लेन द डाउट ऑफ विकास. देखो, mobility, I said it is equal to drift velocity divided by E. Correct? For certain amount of electric field, if drift velocity is more, I will say mobility is more. Correct? For certain amount of electric field, fixed electric field, if drift velocity is more, I'll say mobility is more. Right? अब देखना यहाँ पे मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला है, स्मॉल ई, कैपिटल ई नहीं, स्मॉल ई टाउ डिवाइडेड बाई एम. अब यहां से देखना, actually if relaxation time is less, है ना, relaxation time is less, let's say because I'm saying this, then mobility will be less. इसी में डाउट है ना तुमको लग रहा है सर रिलैक्सेशन टाइम लेस है तो मोबिलिटी कैसे लेस है. ध्यान से सुनना. if the relaxation time is less, that means so many collisions are having very fast, है ना, बहुत जल्दी जल्दी collisions हो रहे हैं, तो the time for acceleration of the charge particle will be very small. ये देखो, आपने फॉर्मूला देखा है ना विकास. if relaxation time is small, है ना, then the time for acceleration will be very small basically, है ना. और एक और चीज आप ऐसे सोच के देखो एक्चुअली कि resistivity of the material is inversely proportional to the relaxation time, है ना. तो अगर relaxation time and resistivity they are inversely proportional to each other, if you actually decrease the relaxation time,
right? If you actually decrease the relaxation time, or let's say हाँ decrease कर लेते हैं relaxation time, तो so many collisions will be happening, है ना? So many collisions will be happening. इसको ऐसे आप टेम्परेचर से समझो तो आपको ज्यादा फील आएगी. Let's say you have increased the temperature, Vikas. Okay, if you have increased the temperature, the relaxation time will be less, है ना? Relaxation time will be less, and resistivity will be more. Resistivity will be more. That means it will not be a good conductor. Not much amount of current will be flowing through it. देखो क्या क्या हुआ. Temperature I have increased, correct? The relaxation time decreased because so many collisions are happening. Time between two collisions are very small. The time the charges are getting to accelerate, it is very small. So that is why the charges will not be able to accelerate properly. They will not be able to gain the enough amount of drift velocity. Before that, only collisions will be happening. That is why it will not be a good conductor. It will not be a good conductor means it will be having high value of resistivity. Getting my point? And if the relaxation time is very small, if the relaxation time is very small, mobility is also very small, right? Obviously, relaxation time बहुत छोटा सा है. So the drift velocity is not able to like increase itself, right? So that is why you can say mu will be also very small. Simple सा थ्योरी जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. Temperature is high, so many collisions, the relaxation time is very small. Relaxation time is very small, resistivity is high, conductivity is not high. Conductivity is not high means small amount of current is flowing. A small amount of current is flowing means Vd is smaller. Getting my point? अब समझ में आया क्या विकास? टेल मी, did you get the point now? Everything should be clear now, I think, right? And each and everything is actually related with each other, right? चलिए, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब आगे बढ़े, है ना? अब आगे बढ़ते हैं. तो टुडे वी हैव किल्ड अ टॉपिक. सर हमारी स्कूल मैम इज लाइक इट्स गुड डूइंग एचसी वर्मा सर्स बुक, डू यू अग्री विद इट? So that depends on how much time you are getting. First of all, I'll say that, Taruni, the reason is quite clear. If you see HC Verma sir's book, the questions at the end are subjective in nature. They are going to take a lot of time. By the way, you will learn the concept. It is important for those who are preparing for JEE advanced examination. Those who are preparing for those kind of examinations, they want to build the problem solving ability like that. They should solve the subjective problems, because even in JEE mains or JEE advanced, you will get questions nowadays which will not have any option. JEE mains में भी अब 5 questions जो हैं from per subject, they are numerical based. तो वो practice करना आपको काम आएगा if you are doing for preparing for JEE mains or JEE advanced. But here, anyways, the time management is difficult for NEET students, right? You have to study so much of theory in biology, so much of theory is there in chemistry, itna sara padhna hai, and after that you have to do physics. If you start doing the HC Verma subjective questions, I'm not sure that if you will be able to complete it or not, क्योंकि time बहुत ज़्यादा लग जाएगा. Even in the batches, in the like offline coachings, कहीं पे भी नीट के बच्चों को हम नहीं कराते हैं HC Verma questions because it is extra unnecessary burden to you if you are going to school as well, है ना? Arihant okay नहीं, Arihant is more than okay. Arihant में you have so many objective questions of all the varieties, right? चलिए, Jyoti Kumari, have you missed the last session? Please watch the recording beta. She is asking to define tau. The definition was given in the last class. It is the relaxation time, the time between the two successive collisions. Okay. तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक करो, इवन इफ यू आर डूइंग तत्व मटेरियल, इवन इफ यू आर डूइंग एमटीजी, इवन इफ यू आर डूइंग दैट डीसी पांडे, कुछ भी करो यार, एक ऑब्जेक्टिव बुक उठाओ, फिनिश इट टिल द एंड ऑफ द ईयर. मतलब रिवाइज इट सो मेनी टाइम्स, है ना? फिनिश तो अभी कर लोगे, रिवाइज इट एटलीस्ट 3-4 टाइम्स. And towards the end of the year preparation, you have to take a lot of mock test series. That will make your preparation very good. Okay. करेक्ट, स्नेहा इज करेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक चलेगा विच इज नॉट हैविंग सो मेनी एरर्स एंड विच इज फेमस, है ना? ओके, चलिए.
आई हैव नो आइडिया अबाउट अवेलेबिलिटी। नहीं एमटीजी है, अवेलेबल है वैसे फिजिक्स के लिए भी। अवेलेबिलिटी मतलब ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन में अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ कहना चाहते हो आप? देखो बेस्ट बुक इफ यू आस्क मी इट इज डीसी पांडे। इफ यू कैन सॉल्व इट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डीसी पांडे, यू आर गोइंग टू अचीव वेरी गुड रैंक इन द एग्जामिनेशन। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। सो देखो एक क्वेश्चन है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल बाय द वे। इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन फिगर शोज अ स्लैब, side lengths are L, 3L and 5L. Your common sense will tell you that this length is L, the smallest one. This length is 3L and this length is 5L, right? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना. The longest one will be 5L, shortest one will be L. ये तो हमें पता ही है. He's saying find the resistance across left and right surface, front and back surface, top and bottom surface. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है क्या हमारे पास? यस, इट इज रो एल डिवाइडेड बाय एरिया. एंड नाउ यू गाइस आर मोर एम्पावर्ड, यू इवन नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एम ई एन टाउ, सब कुछ आपको पता है ना. खैर, सो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय एरिया. व्हेन दे से लेफ्ट एंड राइट surfaces, meaning of that is do I have something looking like that only? मेरे पास कुछ भी नहीं है यार. एक माजा का खाली बॉटल दिख रहा है, खाली डब्बा सा, इसको कंसीडर कर सकते हैं ना. तो देखो लेफ्ट एंड राइट का मतलब है दिस वन एंड दिस वन, राइट. इफ यू कंसीडर दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, दैट मींस यू आर अप्लाइंग वन पोटेंशियल ऑन दिस साइड, अनदर पोटेंशियल ऑन दिस साइड. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे इन दोनों के बीच में. पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड बिटवीन दीज टू सरफेसेस. करंट का फ्लो डायरेक्शन है ना, आई विल जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ दिस because I'll use for second question as well. So 1 second बच्चों. हाँ, so I was saying if you apply one potential on the left side, one on right side, current will be flowing from left to right obviously, है ना. In that case if you have to write down the resistance, formula is rho L by A. Always remember the resistance में length is taken along the direction of current. तो बच्चों along the direction of current which length you are going to take? L, 5L or 3L? बताओ मुझे. Along the direction of current which is the length? L है, 5L है या फिर 3L है? 5L है ना. Current is flowing in x direction, x direction का length is 5L. ठीक है. So sir that cuboid sum was in YouTube lecture. Okay. तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, I is in 5L, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा देखो, R is equal to rho multiplied by 5L divided by area. Area you will take perpendicular to the direction of current. तो this area, right? और area of the right or left phase, that's it. तो जैसे हम कंडक्टर की बात करते थे, we used to take the cross sectional area if current is flowing in this direction. Similarly, है ना. So अब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, because this is like area is 3L multiplied by L. करेक्ट बच्चों, ये वाला एरिया कितना? 3L multiplied by L. Your answer for area is 3L square. L and L cancel, your answer will be rho 5 divided by 3L. आ गया देखो, 5 rho upon 3L, है ना. Similarly, if I consider the second case में he is saying front and back surfaces. तो बेटा this is the front surface, है ना, and behind will be the back surface. So front to back, the current would be flowing in this direction, right? ऐसे देखो, है ना, this is how the current would be flowing from front to back like this. तो हाउ मच लेंथ करंट विल बी कवरिंग? देखो ये वाला लेंथ कितना है, लेंथ कवर्ड बाय द करंट 3L, है ना. और लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज 3L. यही वाला तो फ्लो है ना वो 3L, फ्रॉम फ्रंट टू बैक इज 3L. तो यू विल राइट नाउ R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय 3L डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, अगेन परपेंडिकुलर टू करंट, तो वो तो ये वाला हो जाएगा, फ्रंट वाला. Anyways, if it is front surface and back surface, you have to take area of front and back. Front and back का area कितना है? 5L multiplied by L, breadth into height. तो आंसर आएगा 5L square. You will get 3 row upon 5L now. Right? Simple. Last question क्या है? Last question he says top and bottom. Top is this surface, right? This is the top surface. Bottom is somewhere here. If the current is flowing from top to bottom, this is how the current will flow. This time what length you are going to take? ये वाला length, है ना. This is along the direction of current, top to bottom.
So rho into L divided by area. If it is top to bottom, take the area of the top one, which is perpendicular to the current. तो बेटा उसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो 5 into 3 यानी कि 15L square. L and L cancel, you will get rho upon 15L. Done, right? It is quite simple. Just take two surfaces which he has given. Current will be flowing along them and area will be taken for the area of cross section only, है ना? बताइए क्लियर हुआ क्या? This is 10th level by the way, and I'm pretty sure ये आपको 10th में भी कराया गया होगा if you studied at a good place. Anyways, even if you not, ऐसे इसको solve करना है. कोई परेशानी इसमें बताइए? Any doubt in this kind of questions, everyone? बहुत आसान होता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है. The direction of current, उस डायरेक्शन का लेंथ you have to take in place of L, perpendicular डायरेक्शन का एरिया you have to take. No doubt, right? चलिए. Okay. ओके वेरी नाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आ जाओ. द एन्युलर सिलेंडर, so it is having some hollow part inside, that is the meaning of it, right? Annular cylinder shown in the figure has resistivity rho. Find the resistance of the current flow along the length of the cylinder. So if the current is flowing along the length of the cylinder like this, and this is the direction of current, length is L in that direction, then you have to tell the resistance. Resistance will be how much. So it is something like this. If you see the front view of the cylinder, the cross sectional area is only up to this area. Inside it is hollow, है ना? Hollow cylinder है ये. Internal radius of the cylinder is RA. ये वाला RA है. External radius is RB. Okay. Options you can see. RA and RB are the two radius given to you. You need to find out the resistance. It is quite easy, by the way. You know the formula as well. Let us start. 5, 4, 3, 2, and 1. Go. Come on. Come on. 10 seconds left. 87% have answered. बाकी लोग तो आंसर ही नहीं कर रहे. इतना सारा टाइम मिला था फिर भी. 90% have answered. बाकी 10% का क्या सीन है? Okay, finally only 91% answered, but let me tell you, this was quite easy for you. Tarini, Shobhit, Megha Vijay, Falak Mehta, Vandana, Vijay Shri, Oslin, Ruchita, Vikas, Dogra have given the correct answer. Let me show you the result. 67%. Amazing. बहुत बढ़िया everyone. You guys just cracked this one correctly. बहुत आसान है. Along the direction of current, length is L. है ना? तो आप लिखेंगे rho into L. Divided by area, perpendicular area. तो यही तो है area. If you have a bigger circle of radius RB, the area is pi RB square. And then you have a smaller circle like this. You need to calculate the shaded area, right? So what is the shaded area? Area of the bigger circle minus area of the smaller circle, right? So if you calculate that, you will get the shaded area. No यार, सोच के देखो यार, simple तो है. बड़े circle का area, you take the bigger circle area and then smaller circle area, you subtract them. You will get the area of the shaded region. बहुत आसान था. चलो देखते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर बी स्क्वायर minus pi r a square. Pi you can take common. You will be getting rb square minus ra square. ऊपर आ जाएगा rho into L. Done and dusted, right everyone? चलिए बताइए, सिंपल है ना? वेरी नाइस. बहुत ही ज्यादा अमेजिंग. बहुत अच्छे बच्चों.
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। सो एक्चुअली दिस पार्ट वाज रिमेनिंग फ्रॉम द लास्ट क्लास. आई वांटेड टू डेराइव इट वंस यू आर कंफर्टेबल विद द फॉर्मूला ऑलरेडी. जब आपको उसमें क्वेश्चंस करने आते हैं, देन आई थॉट ऑफ गिविंग यू द एनसीईआरटी स्टफ, बट आई हैव गिवन मोर देन एनसीईआरटी. मैंने आपको रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला दे दिया है इन टर्म्स ऑफ एम एन ई टाउ, एवरीथिंग इज गिवन, राइट, नथिंग इज लेफ्ट. ढंग से पढ़ लेना उनको, ओके, जस्ट रिवाइज देम. ओके, नाउ elements of circuit. So now we are moving towards the circuit theory, and let me tell you, circuit theory will not have any mathematics going forward. Simple addition subtraction तो होगा ही, but not multiplication division और इतना बड़ा बड़ा mathematics will not be there. You just have to use your brain to find out the current flowing through the circuit, voltage, and it is literally fun, I'm telling you. And I'll teach you in a particular, you can say, flow in which you will learn all the circuits method कि कैसे कौन सा circuit solve होता है. You will be able to do it quite easily. ठीक है. So from now be careful, अभी मजा आने वाला है बहुत ज्यादा और बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ चालू हो रहा है. ठीक है. The I equal to NEA VD was also interesting, है ना, मैंने आपको इंटरेस्टिंग बना के ही दिया, but this is even more interesting बच्चों. First of all, let's talk about the battery. These are the components we are going to talk about, by the way. Battery, resistance, connecting wire, we'll study about that, right? So actually, we are not going to talk about the chemical aspect of the battery. You do that in your chemistry, है ना. सेल के बारे में आप पढ़ते हैं, कौन कौन सा chemical reaction होता है, how the potential difference are is created, and all those things. But for us in physics, it is a device that stores the chemical energy, converts it into the electrical energy. It is a two-terminal device. Generally, we show this kind of terminals, right? Bigger terminal always knows, always means it is higher at potential. Smaller is the lower potential. Higher potential we generally write plus, lower potential we will write minus. So whenever you see plus potential and minus potential, plus is higher, minus is lower. Okay. Same potential difference is maintained between the terminals of the battery by means of chemical reaction. मतलब some potential difference है ना. This potential difference is also called EMF, electromotive force. Okay, it is known as electromotive force. The terminal which is at higher potential is termed as positive potential. Terminal which is at lower potential is called negative. सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है ना यार. सो हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, सम केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन. द potential which is developed is also known as EMF. By the way, there is some difference between electromotive force and the net potential. It is because of the internal resistance of the cell. Any cell will also be having some internal resistance. The actual EMF of the cell is EMF only, right? But because of the internal resistance, if you consider the whole battery like this, actually the potential difference between these two ends will be slightly different. So potential difference is the actual one, what you are achieving. But EMF is the potential which is developed due to chemical reactions. Okay. Potential difference developed due to chemical reaction is EMF. But because of some resistance present, potential difference, actual potential difference will be slightly different. तो वो हम बात करेंगे बाद पे, उस पे है ना, इस पे डिटेल पे डिस्कशन होगा. But yes, for now, these basic things we wanted to know. Once we go ahead with the cell combination in series and parallel, you will see this in more detail. चलिए बच्चों, तो ये सिंबल हो गया बैटरी का. लॉन्गर लाइन है ना, पता है आपको, पॉजिटिव, शॉर्टर लाइन इज शोइंग द नेगेटिव. वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ बच्चों, ये जो चीज अभी मैं सिखा रहा हूं ना, दिस विल बी वेरी यूजफुल इन सर्किट थ्योरी, तो प्लीज अच्छे से सीख लेना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सी, इफ आई राइट डाउन 10 volt here. So let's say if you have a cell, the pencil cell that we use in remote, generally 1.5 volt be written, will be written, right? What is that 1.5 volt? It is actually the potential difference between these two terminals. Or else if you connect any device to this battery or cell, a potential difference of 10 volt can be maintained. तो ये सिर्फ डिफरेंस होता है, इट इज जस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, राइट. नाउ एक्चुअली द कैच हियर इज, I can take or I can assume
any value of this side potential, any value of this side potential. What I'm trying to say is you are just given the difference of the potential. For example, let's say there are two friends, okay, they are going for shopping. Ye friend number 1 hai, this is friend number 2. Circular friends are there. Let's say they are talking about this, that whatever money you are having and whatever money I'm having, the difference is 100 rupees. That means one person is having 100 rupees more than the other person. Will you be able to tell how much money they are having? How much money one is having, how much money two is having? Will you be able to tell me? नहीं, कैसे बताएंगे? मतलब one person can have 1100, another person can have 1000. Just one information we have, right, which about which we are sure. हाँ, ये smile बन गया, सही बात है. We are sure about just one fact कि they are having a difference of 100. ठीक है. अच्छा, electromotive force means electrons को motive करने वाला force flow is. हाँ, सही है, सही है. It gives the electrons the motivation to flow, so that is known as electromotive force. nahi, that is correct actually, है ना. When I'll discuss this, I'll teach like this only, by the way. ऐसा ही कुछ होता है. खैर, so बच्चों, if one is having 100 rupees more than two, one can have 1 lakh and 100 rupees also, है ना. And two can have 1 lakh rupees, still the difference will be 100. So by seeing the potential difference, you cannot comment on how much potential this is having, how much potential this is having. Very definitely you can comment on one thing, which is the difference is 10. ये मैं बता सकता हूं बस पक्के के साथ, है ना. बट अब इसका हम ना फायदा उठाते हैं. हाउ डू वी टेक बेनिफिट ऑफ इट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, generally the lower potential is always assumed to be zero. It makes the question easier, that's it. और कोई reason नहीं है. If you take the lower potential at 0, obviously you should take higher potential at 10, so that the difference is 10, है ना. जैसे यहाँ पे आप assume कर सकते हो ना, you can assume कि okay, one of the friend maybe he is having 100 rupees, another friend is not having any money, so the difference between their money is 100. Simple. I can assume anything, but is it completely true कि this is having 10, this is having 0? No, I'm not sure. I'm not sure. मैंने तो बस कहाँ बोला मैंने ऐसा कुछ? मैंने बोला difference 10. I just say difference is 10. But to solve the question, I am going to take advantage of this. I can write 0 as the lower potential. कोई नहीं रोक सकता मेरे को, because still my statement is fit here कि 10 minus 0 is 10. So as long as potential difference is remaining 10, I can take any potential on the two sides. For example, if I write 2 on this side, बच्चों, तो can you tell how much will I have to write on this side? Chat box में बताइए. मेरा मन किया किसी दिन मैं इधर 2 लिखूंगा. I thought of writing 2 on this side. How much shall I write on the other side? Kalyani is saying 8. Anjali is saying 8. 8 वाले हैं बीच बीच में, है ना. 12 बेटा, 12. So that higher minus lower, 12 minus 2 will be 10. है ना. आपके स्कूल में 8 minus 2 10 होता है क्या? नहीं ना, मेरे यहाँ तो नहीं होता था ऐसा. अच्छा, जस्ट किडिंग, आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दिया होगा, डोंट वरी. बट हाँ, 12 minus 2 is 10, है ना. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंजलि, हैपेंस. ओके, मेरे में होता है. ओके, आई थॉट ऑफ दैट. तरुणी, मुझे यही उम्मीद थी. खैर, जस्ट किडिंग. नाउ लेट्स से, अब आपने के साथ थोड़ा सा मैं ब्रेन के साथ खेल लेता हूं, है ना. चलो, मान लो 10 वोल्ट है. आई एम राइटिंग 4 वोल्ट हियर. यू हैव टू टेल मी हाउ मच इज द पोटेंशियल हियर. बताइए. 10 वोल्ट है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 वोल्ट. कितना लिखूं इधर, बोलो. 14. करेक्ट, 14 वोल्ट. अच्छा, 10 वोल्ट है. दिस साइड आई राइट -2. अब बोलो इधर कितना लिखेंगे. 8, 16. अब कितना लिखेंगे, बोलो. 8. 8 minus -2 will be 8 plus 2, which is 10. यहां पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बट या 8 is the correct answer. Now you will write 8. Because if you take higher minus lower now, तो आपका आंसर क्या आएगा. higher minus lower, which is -2. आंसर आ गया 10. So again the difference is 10 only, right? So this is simple mathematics. इसमें mistake कभी भी मत करना. And please remember, I may assume anything. I may assume anything. I may assume 4 and 14. I may assume -2 and 8.
I may assume 2 and 12, I may assume 0 and 10, but in all the scenario जो ट्रूथ है ना, जो तुम्हारा सच है, जो तुम्हारा सत्य है, वो ये है कि इट इज 10 10 10 एवरीवेयर. डिफरेंस इज 10, दिस इज सत्य है ना. बाकी सब क्या है, वो छलावा है. इफ यू अंडरस्टैंड हिंदी है ना. गोकुल इज सेइंग यस सर, आई think he understood the meaning of chalawa. That's a very nice thing. Okay, no problem. Try this question now. बैटरी का सत्य है वो. हाँ, the EMF of the shown battery is 10 volt. Choose the best interpretation. बेटा देखो, बेस्ट इंटरप्रिटेशन बोल रहा है वो. बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज VA is 5, VB is -5. VA is 10, VB is 0. VA is 0, VB is -10, or VA minus VB is 10. Which is the best interpretation that you can make from here? So this is not a quiz, by the way. Hotspot करना पड़ेगा. ये लो, hotspot कर दिया. आ जाओ. Okay, done. 94% have already answered. So let me end this. 5, 4, 3, 2, and 1. Go. Let me see बच्चों. 70% have given the correct answer, but इतना पढ़ाने के बाद भी लोगों ने मिस्टेक कर दी है. अरे नमूनो, I told you, you cannot comment on VA and VB. How much money both the friends are having, you cannot comment on them. Yes, you can assume. This is a true statement. This is a true statement. This is a true statement. But it is having a condition कि हमें इसका surety नहीं पता है कि whether they are having these much potentials. But only thing we know surely, this is the meaning of best representation, right? Is this only. You can only comment on the difference with full confidence. कि the difference will be 10 volt because it is a 10 volt battery. How can you tell it is 5 or -5? समझ आ रहा है? The 30% students, are you getting my point? The best interpretation is D only. Sir, I remember doing all these last year for preparation of KVPY. Deja vu moment. अच्छा जी, चलो बहुत अच्छी बात है. Got it, guys? चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मजे लेने चालू हुआ. हाँ, नहीं अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, डोंट वरी. ठीक है, कोई बात नहीं, बट प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट. ओके ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं. रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है ना. करंट फ्लोज फ्रॉम वन एंड एट हायर पोटेंशियल टू एंड एट लोअर पोटेंशियल. दिस इज द फैक्ट अबाउट द रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस का सत्य है. देखना, इफ यू हैव अ रजिस्टर बच्चों, and let's say this side potential is 30 volt, this side potential is 10 volt, all of us know the current will flow from higher potential to the lower potential. So if you remember, I taught you connecting of conductors in the end of the electrostatics. दो conductor उठाया, दोनों को touch किया, we connected the two conductors. We said even though one conductor can have more charge, but if it is having less potential, the current always flows from higher to lower potential. तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है. Higher potential is 30, 10 is lower, तो ये ऐसे फ्लो करेगा. And whenever current direction is known, we can generally write down this side is plus, this side is minus. Plus का मतलब high potential, minus का मतलब low potential, है ना. So for example, I'm spending more time in these things because ये बहुत critical चीजें हैं. If they are not clear, you will not be able to do the questions of circuit theory. बच्चों, if I say left side current is flowing, then this side will it be plus or minus? इस side current is flowing in this direction, this side will be plus or minus? Tell me everyone. माइनस वाले भी हैं कुछ लोग. बेटा, current always flows from higher to lower.
सो वेरेवर इज द, अच्छा फलक कह रहा है इक्वल कर दो सर, वाह बेटा वाह, बहुत आगे जाओगे। हायर टू लोअर, राइट? सो करंट इफ इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, obviously this potential has to high, this has to low, then only current will flow like that, right? चलिए ऐसी mistakes मत करिए यार, please please don't do that, okay? Thermal power, whenever a current flows through a resistor, a heat will be generated always. कोई सा भी आप केस ले लो, like in the earlier days we used to have this coils, है ना, coil water heaters, है ना, so you will put it inside the bucket to heat the water. अभी भी कई घरों में यूज करते हैं, not a big deal. So this is also a resistance only. When current is flowing through it, it is generating heat. So you are taking the suitable material which can be heated easily, and that heat is used to or utilized to heat the water. Simple. So this is the application of this particular theory, thermal power. So thermal power is given by I square into R, V square divided by R, or V into I. Each and every formula is perfect, no problem in that. The unit will be watt, and joules per second will be the unit. So I square R, V square upon R, V into I. How are we getting that? Using the Ohm's law. So all three are perfect. I square R, V square upon R, V into I. ठीक है, चलिए बताइए everyone, are we clear on that? So now slowly we are building our concepts so that we can do the circuit theory and all, है ना, circuit problems हम कर पाए, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया everyone. Now let me teach you one more thing. ये देखिए ये वाला topic. Two resistors are given, R1 and R2. They are in series, right? We can see they are in series. What thing will remain same where they are when they are in series? Current या फिर potential difference? Shift दबाना भूल गए थे, अच्छा अच्छा। Current will be same है ना, potential difference will be different obviously. हाथ लगाए एंड पर हीटर के तो जिंदगी के मजे भी ले सकते हैं सर, मैंने लिए हैं एक बार, वाह। ओके वंशिका, वेरी नाइस। डम वेस्ट टू डाई से मुझे कभी कभी डर लगता है, तुम लोग ज्यादा मोटिवेट तो नहीं हो जाओगे ना, वरना एक दिन न्यूज में मेरा वो आएगा, न्यूज आएगा कि लर्निंग डम वेज टू डाई फ्रॉम फिजिक्स टीचर स्टूडेंट डिड दैट। ऐसा मत करना, ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट। all the stunts that I tell you, maybe they are performed or not performed, but you don't have to replicate that, okay? हाँ, ये है वो जो बच्चे को उकसा रहा था। फोटो लगेगी मेरे ऐसे वेदांत टी शर्ट पहन के, है ना? नो नो, आई डोंट वांट दैट, बाय द वे। आई कैन टेल यू सो मेनी इंसिडेंट्स लाइक दैट, ओके श्योर, व्हाई नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो दो रजिस्टर्स है मेरे पास, आई हैव टू रजिस्टर्स, ओके एवरीवन। How many resistors do I have? Two resistors I have. Imagine this resistor is of 3 ohm. This resistor is of 6 ohm. And then they are connected to the battery like this. Okay. ये देखिए बच्चों, इस बैटरी से कनेक्टेड है। अब देखना ध्यान से। If I say this battery is of 18 volt, can anyone in the class tell me how much current will be flowing through the circuit? Sneha says 2, Swasni says 2, Nisarga says 2, almost all of you say 2, है ना, बहुत बढ़िया। How do I solve it? How do I solve for current? First of all, I will find out the R equivalent. 10th level से भी नीचे का क्वेश्चन है ना। तो 3 and 6 are in series. Series में they will be added. So your R equivalent will be how much? 6 plus 3, that is 9. So the same circuit can be replaced with this one, 9 ohm का single resistor, and then you have 18 volt का battery, है ना। So the current will be what? V upon R, correct? So your answer will be 18 divided by 9, that is 2 ampere. No problem, बहुत बढ़िया। So 2 ampere current will be flowing through these two. बहुत बढ़िया, समझ आया सर ये तो, ठीक है। 2 ampere current is flowing. I can also say 2 ampere current will be flowing through 3 ohm as well as the 6 ohm. इसमें भी कोई डाउट नहीं है। But if I ask you how much is the potential drop across V1 and how much is the potential drop across V2, so you will definitely say it will be how much potential drop across V1,
कैसे लिखेंगे आप? करंट विच इज 2, रेजिस्टेंस विच इज 3, 3 इंटू 2 इज हाउ मच बच्चों? 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा बताइए? 3 इंटू 2 विल बी 6, है ना? तो यहाँ पे 6 वोल्ट आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V2? 6 2 जा 12। वन थिंग टू अंडरस्टैंड, इफ यू टेक V1 प्लस V2, कितना आ रहा है आपका आंसर V1 प्लस V2 का? 18, which is the total potential difference. तो one thing that we can conclude from series combination is V1 plus V2 is equal to V होता है, ठीक है? Sometimes the circuits will be slightly complicated. Let me tell you. कई बार ऐसा होगा कि circuits will be complicated. You will not be able to calculate the current and you will not be able to calculate V1 and V2. उस केस के लिए V1 V2 का एक फॉर्मूला याद रखना, रिमेंबर करना है इसको, ठीक है? V1 is R1 upon R1 plus R2 into I. R1 upon R1 plus R2 into I. I is the total current. And V2 is R2 upon R1 plus R2 into I, where I is the total current. समझ आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? वैसे कोई बड़ी बात नहीं है. Even if you solve the circuit, आपका आंसर आ जाता है V1 V2 का. Even if you apply this formula in the previous question, देखो V1 अगर हम निकालेंगे, R1 was 3, R1 plus R2 was 6 plus 3, that is 9, and the total current flowing was how much बच्चों? 2 था मेरे ख्याल से, है ना? 2. तो इसको सॉल्व करके भी आपका आंसर मेरे ख्याल से वही आ जाना चाहिए था, है ना? तो ऐसे भी कर सकते हैं आप. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? और अदरवाइज यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस मेथड ऑफ डूइंग दिस. ओके, बताइए क्लियर है क्या? कम ऑन एवरीवन, टेल मी क्लियर. बहुत बढ़िया. अच्छा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? बाय द वे, पैरेलल में करंट विल बी डिफरेंट. पैरेलल में करंट डिवीजन हैज टू टेक प्लेस, राइट? So current division, if it has to take place, then you will write, let's say some current I flows from here, right? चलो ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, आपको ज्यादा मजा आएगा. क्वेश्चन करो, you will learn more. Current division is more important than voltage division. Voltage division आसान होता है. So let's say from one path, a current of let's say 10 ampere is coming. Okay, everyone. If I have two resistors now in parallel, we know the current will not be same. Potential difference will be same across these two. If I say one is of 2 ohm and the another one is of let's say 6 ohm, कैसे निकालेंगे how much current is flowing through 2, how much current is flowing through 6? I will tell you the method. Please see the solution everyone, and this you have to learn. Simple mathematics है, सीख लो, बहुत काम आएगा, because we are going to do the circuit theory now. So they are in parallel. One thing that we know is current total, which is 10. It will be equal to I1 plus I2. I mean, some of the current will be flowing in this direction, some of the current will be flowing in this direction, right? Actually, if you write down the Ohm's law, which is V equal to IR, you will come to know I is equal to V upon R, right, bachcho? We also know the potential difference across both the resistors are equal. So for same potential difference, can I say current is inversely proportional to the resistance? बिल्कुल लिख सकते हैं. Current flowing through any resistor is inversely proportional to the resistor. यानी कि if this resistor is less, this current will be more. If this resistance is more, current will be less. Obviously, in whichever path current is finding more resistance, why will it flow through that path? It will flow through some other path where resistance is less, है ना? जिधर रेजिस्टेंस कम है उधर से निकल लो, है ना? काम खत्म. तो सिंपल है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. हियर यू कैन राइट वन थिंग, छोटा सा मैथमेटिक्स देखना. इफ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कैन आई राइट I1 is to I2 is equal to 1 upon R1 is to 1 upon R2. ये तो सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन वाला है ना? है ना? सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन. I1 is to I2 is equal to 1 upon R1 is to 1 upon R2. बहुत आसान सी बात है सर ये तो चलो लिखते हैं. I1 is to I2 is equal to 1 upon R1, 1 upon 2 is to 1 upon R2 which is 1 upon 6. ठीक है सर, आसान है अभी भी, है ना? बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ. In this what you have to do now, I1 is to I2 तो आपने लिखा, 2 और 6 इसका LCM ले लो. All of us know that, right? और the lowest number with which both will be divisible, 6 आ जाएगा. 6 से मल्टीप्लाई करो. If you multiply with 6 here, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो, if you multiply with 6 here, 6 here, तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पे?
6 upon 2 is 3 is 2. 6 upon 6 is 1. So you will get the correct ratio of I1 is to I2. In this step, what we have done after writing 1 by 2 and 1 by 6, we have taken LCM of 2 and 6. If you are not even able to find out the LCM, take the product of these two, 6 and 2. 12 आएगा product. Multiply with the product. Still you will get the same thing. So multiply with the product मतलब 12 से multiply कर दो. 12 by 2 is to 12 by 6. So it will be what? 6 is to 2 or 6 is to 2 or 3 is to 1. They are same thing, right? अगर रेशियो आप लिखते हैं 6 by 2 या फिर 3 is to 1, एक ही बात तो है. अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो कह रहा हूं मैं, है ना. अदरवाइज आता ही होगा यार, एलसीएम निकालना किसको नहीं आता है ना, सभी को आता है. सो टेक एलसीएम, मल्टीप्लाई विथ एलसीएम, 3:1 आ जाएगा. नाउ it's like there are total 4 pieces of pizza. 3 plus 1, 4 pieces are there, and I1 is getting 3 pieces. तो I1 का करंट क्या होगा पता है? I1 is 3 pieces out of total 4 pieces. 4 मतलब 3 plus 1. 3 out of 4 of the complete pizza, यानी कि total current 10. यहां से you will get I1. Are you getting my point? Similarly, I2 is how much? I2 is 1 out of 4 parts. 1 out of 4 parts. So you will be writing 1 upon 4 into 10. Done and dusted. यहां से आपको दोनों करंट्स मिल जाएंगे. Getting my point, everyone? एक बार देख लो सब लोग इसको. सिंपल सा थ्योरी है यार. करंट डिवीजन आना चाहिए. इफ यू डोंट नो करंट डिवीजन, आगे जाके देर आर अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट थिंग्स इन दैट केस, राइट. सो ऑल द डिफिकल्टीज आई एम ट्राइंग टू रिमूव फॉर यू ऑल. ओके, चलिए बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाउ विल यू डिवाइड द करंट इफ टू डिफरेंट पाथ्स आर गिवन टू यू ऑल? है ना, हम ऐसे करने वाले हैं. ठीक है, चलिए बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. एंड दोज हु आर लेजी एनफ टू डू दिस मच ऑफ कैलकुलेशन, ये वाला फॉर्मूले से भी आपका काम चल जाएगा. ठीक है, तो I1 will be R2 upon R1 plus R2. This will also work perfectly. जैसे कि हमको उस केस में I1 निकालना था. This R2 was 2, this was 6, I guess, right? हमने यही लिया था क्या? तो I1 will be how much? R2, that is 6, divided by R1 plus R2, which is 6 plus 2, that is 8, multiplied by total current I, which is 10. तो आंसर हमारा भी यही आया होगा मेरे ख्याल से, है ना. 3/4 into 10. चेक कर लो एक बार. 3/4 into 10. I am saying if you don't want to remember the formula, simple mathematics है यहाँ पे. But if you are saying sir mathematics वो क्या होता है, then I'll say remember this. Getting my point बच्चों? और I2 निकालना है तो R1 upon R1 plus R2 कर लो, multiplied by I कर लो. So I2 will be also you will be getting from that formula also, right? अगर आप I2 निकालेंगे तो क्या आएगा? R1 which is 2 divided by R1 plus R2 which is again 8 multiplied by 10. तो ये देखो 1 upon 4 into 10 आ गया. ठीक है, so first I have told you how to do this mathematically. Second formula है. ठीक है, as we are same in both sides, so can we also calculate I with equate V also, right? I with equate V, but for that you will have to know the potential, right Plabani? Here I said when potential is unknown, did I take potential? पोटेंशियल तो पता ही नहीं है. अरे पोटेंशियल पता होता तो मैं इतनी मशक्कत क्यों करता. इफ आई न्यू पोटेंशियल आई विल राइट आई इनटू आर. खत्म, है ना. चलिए, शैल आई गो हेड नाउ? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? ये बच्चों वैसे 10th में आपको पढ़ाया गया होगा. इफ यू हैव स्टडीड फॉर फाउंडेशन, बोर्ड्स में नहीं पढ़ाते हैं 10th के, फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाते हैं. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, बहुत अच्छे. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. रेजिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ बल्ब. अब ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग एलईडी और सीएफएल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना. टंगस्टन बल्ब जो होता है अपना, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं ना. एडिसन बल्ब, you know what, nowadays addition bulbs are in like fashion. If you search addition bulb in Amazon, तगड़े तगड़े बल्ब मिलेंगे तुमको, वैसे रोप से ऐसे लटके हुए, है ना. so they look quite good. खैर, so actually पोल बंद करो. पोल तो बंद ही है. एसएम, देयर इज नो पोल गोइंग ऑन. अच्छा, मे बी यू आर सेइंग चैट बंद करो. चैट भी बंद हो गया है.
So actually whatever component you are having in your house, जो भी आप चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर हो, each and everything is a resistor. सब कुछ ना कुछ रजिस्टर ही है. दे आर हैविंग सम पोटेंशियल ड्रॉप, सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम, एंड दे आर फंक्शनिंग, है ना. सो सेम गोज विद द बल्ब एज वेल. अब बल्ब में क्या होता था, देयर वाज अ फिलामेंट, है ना. दिस फिलामेंट इज ऑल्सो अ वायर ओनली, राइट. सो दैट इज ऑल्सो हैविंग सम रेजिस्टेंस, एंड you are getting light from these bulbs due to the heating of the resistor. यहाँ पे हीटिंग की वजह से मतलब कि लाइट आता था, है ना. एंड दैट इज व्हाई देयर लाइफ वाज वेरी स्मॉल, एंड बाय द वे दे वर चीपर. अभी जो एलईडीज आते हैं, nowadays we are using the LED lights, their life is so high as compared to this bulb, or even as compared to the CFLs. The LED has very 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 high life. The reason is, कोई heating वीटिंग का सीन नहीं है. I mean, heat is generated because there is light, but actually the mechanism of this is different. These works on semiconductors. So semiconductors is the last topic of class 12 physics, and very interesting topic. There you will learn that semiconductors, if they are connected across some suitable potential difference, they throw out lights. And if you are able to manage that energy, and if you are able to manage that wavelength in the visible light, तो आपको उसमें से लाइट मिल जाता है ना. Even you must have seen the TV remotes, मतलब earlier days it was visible, now they put a cover. There used to have a bulb in the front of the TV remote. Have you seen that, everyone? वो bulb देखा है क्या? So those bulbs were also LED bulbs. They used to emit the infrared radiation. You will not see any light traveling from your remote to the TV. हालांकि if you want to see that light, take your phone ka camera, try to see that light, you will see that also. Getting it now? Sir, please tell in English, please forward, sir. I'm speaking in English only, right, Gokul? Am I using it very frequently? It's my mother tongue, so sometimes some words I say in English. Am I using too much of English today? I mean Hindi. Okay, I'll try to reduce it. Okay, Gokul, don't worry. Actually, what happens when I teach in YouTube, right, in the afternoon, I have to take completely in Hindi. So that kind of inertia of speaking Hindi and then coming to this batch, so sometimes it's like slightly difficult to manage. Okay, but yeah, शुद्ध हिंदी यूट्यूब में देयर इज शुद्ध हिंदी, बाय द वे, है ना. खैर, नो प्रॉब्लम. आई ट्राई टू like give more weightage towards English only, right? Don't worry. Fine. Okay, Sneha, yes, but those who don't know Hindi, they will feel that, right? उनको समझ में नहीं आएगा. Okay, fine. So let me explain this. So LEDs are actually they are emitting the electromagnetic waves, and remote ka bulb, you will not see any light traveling, because the wavelength of that light traveling from bulb to the TV is actually an infrared wavelength, and human eye cannot see the infrared, right? Human eye can only see the visible rays. So that is why the LED lights that we are using, they are emitting the wavelength of visible. So that is why you are able to see that. Chalo, theek hai. That is a different topic. Semiconductors may we will have a like this detailed discussion about it. First, let's comes to the this, right? Resistance in the form of a bulb. So as we said, bulb is using a filament. That filament is obviously now get questions of this variety. There are three bulbs in parallel. This is their wattage, the power. This is the voltage. Tell me which of the bulb will be glowing with the maximum brightness. Such questions are common in NEET examination. First of all, let me tell you, whenever three bulbs, four bulbs, five bulbs, whatever is given to you in the question, the first step is convert the circuit in terms of resistor. Bulb को remove the bulb and draw the suitable resistor there. I'll tell you how to find out the resistance of the bulb. Bulb is having a resistance, and for me, if I'm going to solve a circuit, how does it matter even if it is a bulb, if it is a microwave, AC, a cooler, pankha, whatever is that device? If I know the resistor of this device, I'll say to examiner, see, just tell me the resistor, I'll solve the circuit. Why do you worry, right? So bulb I'll remove,
I'll put the suitable resistor and solve the circuit like I'm doing it since ancient civilization. So there is no difference in these questions. Just you have to be slightly careful about one fact, which I'm going to tell you now. So if you go to buy a bulb, the Edison bulb, especially not LED ones, LED maybe power rating is given and power and voltage both are given. Especially if you go to buy a bulb, है ना? So there was a company which I remember when I was a kid, Surya. Surya bulb used to come. It was having this kind of a shape as well, like a sun, है ना? So just below Surya, it was written 100 watt at 220 volt. Any bulb you buy or any device you buy, any electronic device, even your phone ka charger, even your laptop ka charger, whatever you are buying, right, it will be giving you power rating as well as the voltage rating, है ना? So for example, if I take this charger, this text is very small, so maybe you'll not be able to see, but it's written 200 to 240 volt. They are keeping this variation because even if you go to some foreign country, if they are having some other voltage, your device should work perfectly there, right? So theek hai, actually to give rating of any power device or electrical device, they will be giving the power rating as well as the voltage rating. Meaning of this rating is, if you give the voltage of 220 volt, then only the bulb will be giving you 100 watt of the power. These are like related to each other. So you know, right, in earlier days it was very frequent, the power used to dim. हम बोलते थे light dim हो गई, power used to dim. So bulb, these yellow bulbs, they will not be glowing at their maximum capacity. They will give very low light, and it was very depressing to see, literally telling you. Once the CFLs and LEDs are there in our world, the life has become less depressing. The yellow light was so depressing. Now also, if you are having just a yellow light in your room, you will feel so depressed, right? So white light is very nice. So they used to dim. Why? Because the actual power was less. Let's say 100 volt only you are getting. So bulb is supposed to give you 100 watt at what rating? 220 volt only. If you reduce the voltage, it will give you less power. Getting my point? तो रेटिंग का मतलब क्या होता है? रेटिंग का मतलब, इफ यू आर गोइंग टू गिव 220 वोल्ट, you are going to get 100 watt of power. Actually बच्चों, can I use these two values to calculate my resistance? है ना? देखो, एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज लाइक, ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर का चेंज में जा रहा है, बट वी कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब टू बी कांस्टेंट. मटेरियल सेम है, लेंथ एरिया सब कुछ सेम है. We will consider resistance to be a constant value first of all. How do I find out the resistance now? If I know the power rating and voltage rating, I have a formula. Power is equal to V square divided by R. Why did I choose this formula only? Because इसमें power भी है, इसमें voltage भी है, इसमें resistance भी है. I have power, I have voltage, I want to find out resistor. So definitely I'm going to use this formula. Step number one in any bulb problem is find out resistance of the bulb and replace the bulb with whatever resistance have you got here. Fine, everyone, getting my point? If let's say it is given to you that a bulb is giving you 100 watt power at 220 volt, तो इसका resistance कितना होगा? देखो, 220 का square upon 100, so it will be 220 multiplied by 2.5. That will be the resistance of the bulb in ohm. Are you getting my point, everyone? समझ में आया? First step of any bulb problem is replace it with a resistor. And once you have replaced it with a resistor, we know how to solve the circuits, isn't it? चलिए, ट्राई करोगे आप लोग एक क्वेश्चन? Shall I give you a question to try? I'm giving you a question, right? Definitely I'm going to give you a question. पहले तो एक एग्जांपल देख लो. Estimate the resistance of a bulb with rating 100 watt and 220 volt. We have taken the same example, by the way. So 220 ka square upon 100, I think you must be getting it as 484 ohm. First step, ohm में resistance and then replace the bulbs with the resistors. Solve it. चलिए. अच्छा, after that, if you want the power of the bulb, actual power, not rated power, actual power,
तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, आई स्क्वायर आर और वी इंटू आई, एनी फॉर्मूला विल वर्क परफेक्टली, राइट, वंस यू हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग. ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ एवरीवन. अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई दिस. ओके, आई होप यू आर डन. चलिए देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर फॉर दिस. So there are three bulbs he has given, 25, 75, 150. देखो बच्चों, actually he says they are connected in parallel to a voltage source of about 100 volt. 100 volt here is not the rating voltage. It is the actual source in which you have connected the bulb. ये उसका voltage है. Now he is saying the all the bulbs are rated at same voltage. Maybe the rating voltage is 220. He has not given the rating voltage. But the rating voltage is something else, not 100 volt. ये आपको समझना पड़ेगा. And they are connected in parallel, right? So देखो ये पहला bulb, then ये दूसरा bulb, this is the third bulb, and they are connected in parallel with a source of 100 volt. Are you getting my point, बच्चों? The actual voltage connected to the bulbs is 100 volt. Their rating voltage, you can assume it to be VR, which is not given to you. You have to just find out which bulb draws the most current, which bulb will be drawing the most current. Okay, चलिए तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं. 5, 4, 3, 2 and 1, go. Okay, so time is up. Let me see how many of you have given the correct answer for this. Wow, only 3 people. Okay, so you people obviously deserve the claps. Vanshika, Tejas, Vandana. These 3 have given the correct answer, and the correct answer is C. If I see the result, 40%. Okay, ठीक है. Majority has given the correct answer. That is a nice thing. Leaderboard देख लो यार, पूरे दिन से आज leaderboard नहीं देखा. So विकास, तरिणी, अरिणी, स्नेहा, शोभित, वंदना, आरुषि, सुहासिनी, खुशी, पार्थ, तेजस, फलक, ऑस्लिन, प्लबनी एंड जोना. बहुत बढ़िया. Very nice everyone. चलो, let me explain this to all of you. Right everyone? See. According to the question, there are 3 different bulbs. Power of this is 25, power of this is 75, power of this is 150. If you read this statement carefully, all the bulbs are rated at the same voltage. Rating voltage is same, and generally it is done at 220 volt in India. So beta, I am considering the rated voltage to be VR. Okay, I am just assuming. If I have to calculate resistance of any bulb, which is the first step, आपको मैंने क्या बताया था? Power is equal to V square divided by R, where obviously V is the rated voltage. So from there we got to know resistance is equal to rated voltage square upon power. If rated voltage is same for all, can I say resistance is inversely proportional to the power? Obviously, I have to say that. So one information I have right now कि the resistance is inversely proportional to the power. 25 watt, 75 watt and 150 watt.
किसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा? विच वन विल हैव द मैक्सिमम रेजिस्टेंस नाउ? Resistance will be maximum if power is minimum. Minimum power is for 25 watt. So can I say बच्चों this is having maximum resistance and 150 is having minimum resistance? बात चमकी क्या? सिंपल सी बात है यार. Resistance and power are inversely proportional and I have to know what is the resistance of each. Maximum resistance will be there if power is minimum, inversely proportional. Minimum resistance will be there if power is maximum. Now just draw three resistors. So let's say this is the first one, second one, third one, and then there is a potential difference of 100 which is applied externally, right? So let's say this is for R25, matlab resistance of 25 watt bulb. This is let's say R75 and this is let's say R150. When any current will reach this junction, देखो यहाँ पे, now it will have to divide into different path, right? This path and this path. And we always know the potential difference is same across three bulbs. The current will be more if the resistance is less. अभी सिखाया था पैरेलल में यही तो होता है. So V is equal to IR, I is equal to V by R. All the resistors are connected in what? Parallel. So they have same potential difference. Current and resistors are now inversely proportional. Whichever resistor is less, current will be more in that. Less resistance kiska hai? 150. It has minimum resistance. So maximum current will be flowing through it. Minimum current will be flowing through the 25 ohm. हो गया, खत्म है. I mean, I'm explaining with so many steps and all, but if you understand everything, you can do it in 30 seconds. First of all, find out which one is having the most resistance. For that, you just have to see which one is having most power. If it is having more power, it will have minimum resistance. So 150 has minimum resistance. If they are in parallel, the current will be more if resistance is less. So if 150 has less resistance, it will have more current. So maximum current will be from 150. Done and dusted. Tell me if you got it. This is how you have to crack the questions based on the bulb. And these are very much important from your examination point of view. बताइए फील आई है क्या टॉपिक की? यस. देखो सर डायरेक्ट V P इज इक्वल टू V इंटू आई भी तो लगा सकते हैं ना. इतना करना ही क्यों है? P इज प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा. हा हा हा. इसका जवाब मैं दूंगा आपको, है ना. इसका जवाब मैं दूंगा स्नेहा. ये डाउट ना बहुत ज्यादा आता है वैसे. एक्चुअली जब आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, P इज इक्वल टू VI, ठीक है स्नेहा. दिस इज टू आंसर स्नेहा's डाउट. स्नेहा इज सेइंग सर I will directly use P equal to VI. Why are you doing these things? I'll say sir P is equal to V into I. Then I'll say all the bulbs are having same potential. I'll say P is proportional to current. More is the power, more is the current. Her doubt is very valid and it is a nice doubt. But let me clear this doubt to you, Sneha. The power values that you have is only at the rated voltage. 150 watt it will give at rated voltage, which is generally 220. You never know at 100 volt which of the bulb is going to give more power. That will depend how much is the resistance. Power will change if your applied voltage is changing. So that is why we are taking resistance into the picture, because resistance does not depend on voltage. Even if it is connected to 25 volt, all the bulbs will have same resistance जो उनका calculated resistance है. Because resistance is the property of that wire. It has to nothing to do with the voltage applied. Power will be different at different voltages applied. So that is why the step that we are following, it is the perfect step, the only step through which you can solve it. First of all, remove the bulbs, draw the resistors, write down the resistance. आई होप यू गॉट माई पॉइंट स्नेहा. अच्छा डाउट है आपका वैसे, बहुत बहुत इंटेलिजेंट डाउट था, बट यस अब समझ में आ गया. पावर वी कैन नॉट गारंटी इट विल बी 150, 75 or 25. इट कैन चेंज if you have any voltage, right?
अच्छा, आप मुझे अगर 5 मिनट ये क्लास एक्सटेंड करने देंगे, इफ यू अलाउ मी टू एक्सटेंड दिस क्लास बाय 5 to 6 minutes, आई विल लीव यू 15 minutes अर्ली इन द नेक्स्ट सेशन. क्या बोलते हो, डील? 5 minute एक्सटेंशन, 15 minutes अर्ली इन द नेक्स्ट सेशन, डील? चलो, एक क्वेश्चन. एंड स्नेहा, इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में भी आ जाएगा, ये जो मैंने अभी समझाया ना, द थिंग यू विल फील दैट हियर व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. अब देखो, 3 light bulbs having power ratings of 25, 75, 150. Same question है, exactly the same question. They have 100 volt, so they are connected across 100 volt. All bulbs are rated at same voltage, ये भी same है. The only difference is this time they are connected in series. Which bulb glows brightest? कौन सा bulb brightest glow करेगा? चलिए, try this now. Bulb number 1, bulb number 2, bulb number 3, 25 watt. मतलब ये ऐसा लिख लो आप, इसको R25 लिख लेना, ठीक है, इट विल बी बेटर. R25, R75, R150. They are all connected in series with a battery of 100 volt. Which of the bulb glows brightest? Okay, I hope we are ready. क्या कहते हो यार? चलिए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है. 5, 4, 3, 2 and 1, go. 5 seconds left. 93% have already answered. अच्छा, इसका ना एक लॉजिक था, पैरेलल में 150 आया था तो यहाँ पे 25 हो जाता, उल्टा कर देते, हो जाता डील. खैर, फलक, वंशिका, शोभित एंड त्रिशमन हैव गिवन द करेक्ट आंसर. कल्याणी भी सही आंसर दिया उसने. चलो, एटलीस्ट मेजॉरिटी इज विद अस, है ना, 44%. चलो, जस्ट सी दिस एक्सप्लेनेशन, आई लीव यू आफ्टर दैट एंड वील मीट एट 6:30. स्टिल यू विल हैव अ ब्रेक ऑफ मोर देन हाफ एन आवर, डोंट वरी, लेट मी फिनिश दिस. ठीक है, देखो guys, one thing is pretty sure, that if I replace the bulbs with resistors, है ना, R25, R75, R150, the logic of finding out the resistance is still the same. The resistance of each bulb will be given by what? V rated square divided by power. तो ये तो अभी भी सेम है. First step is finding out the resistance of the bulb. Simple. Rated voltage is same for all of them. So again, resistance is inversely proportional to the power. So again, which resistance is having maximum resistance? बताओ, कौन सा बल्ब का maximum resistance होगा, किसका minimum होगा? वो तो same है ना बच्चों. So minimum will be for 150, इसका minimum हो गया, and maximum will be for 25. ये तो सत्य है. ये सर्किट पे डिपेंड नहीं करता. This will not depend on the circuit. This will not depend on the external voltage applied. The resistance of the bulb is the truth of the bulb. It will not change. Resistance is, हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक्चुअली. सो व्हेन यू राइट V is equal to IR, the formula of R is V upon I. Correct? Does resistance depend on V and I? मस्त क्वेश्चन है, बताओ. If formula of R is V upon I, does resistance depend on V and I? Tell me. Tell me. Come on. 2 मिनट दे दो यार. वाह वाह नमूनोवास. 31% said yes. No, it does not depend on V and I. देखो, सुनो ध्यान से. Let's say you have a resistor of 5 ohm. If you connect it to a 5 volt battery, how much current will be flowing in the circuit? How much current will be flowing in the circuit? Tell me everyone.
5 volt battery, how much current will flowing? 1 ampere. If you take the same resistor 5 ohm, if you connect it to the 10 volt battery, how much current? 2 ampere. Voltage and current, they will adjust themselves so that the ratio of V and I are same, because resistance is the property of the conductor. It has nothing to do with the applied voltage and current flowing through it. Resistance is rho L divided by area. If conductor has a specific length, if it has a specific area, if it has a specific material, how the resistance will change if potential changes or current flowing through it changes? Getting my point? Same for the bulb. Bulb can have different power at different voltages. It is immaterial. The resistance is the physical property of it. It will remain same. That is why we replace with resistance, right? चलिए कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है जैसा पहले किया था. इट इज द सिमिलर. सो लेट मी डू इट नाउ. सर मैंने आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पावर वाला लॉजिक लगाया कि जितना पावर उतना ज्यादा ब्राइट. अरे रे रे, ऐसा कुछ नहीं बेटा. तो फिर ये सर्किट सीरीज भी तो गिवन है, वो भी तो सोचना है. Series is given, right? Now let me solve this question for all of you. बहुत simple है. So now this is connected in series, right? Namuno, tell me, this is maximum resistance, this is the minimum resistance, right? Tell me what factor remains same in series combination? Like previously voltage was same. Here what will remain same? Current will remain same, right? Achha, if current is same, right? You have the power ka formula which is V into I, correct? Power का formula V into I, or you can say power का formula I square into R, power developed by the bulb. Can I say if all the bulbs are having same current, then the bulb having more resistor will have more power also? अरे simple तो है यार. Whatever it's same, you have to bring that into the formula, keep it constant, and then compare. So power is I square into R. I square is same, so power is directly proportional to R. Now you will say, sir, sometimes you say resistance is inversely proportional to power, then you say power is directly proportional to R. Both are the different things. When I write this equation, I'm trying to calculate the actual resistance of the bulb using the rated voltage and rated power. But now power developed when I have to calculate, then current is same, it is given to me, right? So more resistor the bulb which is having will be having more power in the circuit. So that is why the more power will be here, 25 watt. Are you getting this point? सबको समझ में आया क्या? Tell me in the poll. You should get the complete feel of it, है ना? So depending on the circuit where you have connected, उसके हिसाब से होगा. And I think स्नेहा जो डाउट आपने पूछा था, आपको अभी क्लियर हो रहा होगा कि सर क्यों सोचना इतना, 25 वाला कम पावर है तो कम पावर है ना? ऐसे नहीं होता. So first of all you have to compare it with the resistors, then only you have to do it, right? चलिए बहुत अच्छे. कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप. What if this was in parallel? They would shine the same. If it is in parallel, they are having the same potential, correct? They are in parallel, they are having the same potential. In that case, for power use the formula V into I, and then you know which bulb is having more current in parallel, right? तो जिसमें ज्यादा current, if current is maximum, power will be maximum. Simple. Okay, Akash, you watched the recording of it. In between I started telling about the resistor, that's why maybe you lost the flow, but it is simple. Okay, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. हाँ, when power consumed is more, it will glow more, it will glow brighter. Okay everyone. See you after half an hour and 7 minutes. Bye bye guys. I'll just remove all the remaining slides from here, by the way. Only 3-4 were remaining, वो हम next class में करते हैं. चलो bye bye everyone, see you.